So 11th class, we were discussing dictionary in the fourth lecture. So I'm continuing with the same topic, and we were discussing how to create dictionary in various alternatives. So you have to specify the key value pairs as keyword arguments inside dict constructor. Okay. What you have to do is take the name of the dictionary. Take any name of the dictionary, dict constructor, the bracket of the dict constructor, make the key value pairs. Okay. Like I am giving here name equal to Arun. Then I am giving salary equal to 40,000. Then I am giving age equal to 40. And print it. Check it out. Inside this dict constructor, you are giving key value pair as keyword argument. Keyword argument means you are providing name to your argument. You are providing name to your argument. Okay. Then second category here, specify comma separated key value pairs. Comma separated key value pairs. But when you are passing the comma separated key value pairs, you have to specify in the curly braces EMP equal to dict constructor. Okay. The bracket of the dict constructor, curly bracket, normal key value pair as you write in dictionary. Okay. Like this. And close this bracket of dict constructor. This method is very much similar when you normally initialize your dictionary. Just हमने किया क्या है, की वैल्यू पेयर्स को करली ब्रैकेट में डाल दिया और करली ब्रैकेट में डाल के उसको डिक्ट कंस्ट्रक्टर के ब्रैकेट में डाल दिया. These are the brackets of dict constructor. And press the enter key and type the name of the dictionary. It will get print. Any doubt up till here to anyone? Any doubt to anyone? All right. Now proceeding with the third way, you specify keys separately. You specify values separately. Do this entire process inside zip function
and close zip function inside dict constructor. ठीक है, कहने का मतलब क्या है? I am taking one dictionary EMP. I have taken dict constructor. उसके अंदर zip function, right? zip function के अंदर कीज सेपरेट, वैल्यूज सेपरेट. पहले कीज बनाओ, नेम, एज, सैलरी. ये हो गई कीज, इनकी वैल्यूज सेपरेट. आदित्य, एज 40, सॉरी, सैलरी 50,000. ओके, ये हो गई वैल्यूज. इनको कर दो जिप फंक्शन के अंदर. ये मेरा जिप फंक्शन हो गया. जिप फंक्शन को डाल दो डिक्ट फंक्शन के अंदर. Am I clear to all? Now print the dictionary. Check it out. Any doubt, any questions, anyone? रिवीजन चल रही है, अगर कोई डाउट है तो डिस्कस कर लो. Don't keep your doubt in your mind. Don't hesitate to ask. +1C, you have any doubt? Kinjal, any doubt? Navya, +1C, any doubt? Yes, Tishnoor, +1C. Deepak, +1C, any doubt? No response is coming from Tishnoor and Deepak. It means they are not in the lecture. Isha Thakur, any doubt? Okay. Gurjot, any questions? ओके, अब जिप फंक्शन क्या करता है? व्हाट इज द रोल ऑफ जिप फंक्शन? जिप फंक्शन विल डू 1-to-1 मैचिंग. फर्स्ट वैल्यू फ्रॉम द की टपल मैचेस विद द फर्स्ट वैल्यू ऑफ वैल्यूज. सेकेंड वैल्यू फ्रॉम द कीज, सेकेंड फ्रॉम द वैल्यूज. थर्ड वैल्यू फ्रॉम द keys matches with the third value from the values. Okay, this is how zip function matches the corresponding key value pairs. Then next method is specify the key value pairs as a sequence. Okay, what is a sequence? Who will tell? What do you mean by sequence? Yes, who will tell, please? Any one child tell me the meaning of sequence. So many times we repeat this name. Time to time this word occurs. What is a sequence? Yes, Himanshu, unmute yourself. Sir, it means that arranging items in a serial order. In the serial order.
Could you elaborate it more? सर जैसे कि हमने देखो सर सर जैसे किसी का हाइट वाइज है किसी को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है एक्सप्रेस। ऑर्डरिंग करनी है एलिमेंट्स की, इंडेक्सिंग हाँ जी करनी है, जैसे लिस्ट और टपल हो गया। सो अब इसमें क्या करना है आपने, यू विल अरेंज की वैल्यू पेयर्स एज अ सीक्वेंस मतलब ईदर लिस्ट और टपल, further enclose them inside outer list or tuple. Finally enclose entire structure inside dict constructor. कहने का मतलब क्या है, EMP द नेम ऑफ डिक्शनरी इक्वल टू डिक्ट कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर आउटर लिस्ट बनाओ, आउटर लिस्ट के अंदर की वैल्यू पेयर बनाओ लिस्ट की फॉर्म में, नेम कॉमा अंश, ये पहला लिस्ट, ठीक है। सेकेंड लिस्ट सैलरी 50,000, नेक्स्ट लिस्ट एज 30, okay. Each key value pair is represented in form of a list. हमारा पहला पॉइंट, arrange key value pair as a sequence, further enclose them inside outer list. अब ये इनको मैंने आउटर लिस्ट में एनक्लोज कर दिया, ये देखो ये आउटर लिस्ट है। फाइनली सारा कुछ डिक्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर, प्रेस द एंटर की, चेक इट आउट। एम आई क्लियर टू ऑल? Any questions, any doubt up till here? Okay. Now our next concept is adding elements to dictionary. Now how you can add elements in the dictionary? Add means addition. अगर मैं EMP डिक्शनरी प्रिंट कराऊं तो ये मेरी EMP डिक्शनरी प्रिंट हो गई, राइट? दिस इज माय EMP डिक्शनरी, क्लियर? नाउ I want to add a new key value pair here. I want to add a new key value pair here. The new key value pair will be added if already that key value pair is not existing. अगर वो वाली की पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। What I want to say, right now what is age? Right now in the given dictionary age is 30. If I try to add a new key value pair, मैंने अपनी तरफ से एक नया की वैल्यू पेयर
असाइन करने की कोशिश की है, बट ऑलरेडी इन द डिक्शनरी दिस की इज एग्जिस्टिंग. So what Python will do, Python will update its value, but will not create another key value pair, because two keys cannot be same. दो वैल्यू सेम हो सकती हैं, टू कीज cannot be same. Now if I print dictionary, check it out. Compare this dictionary with this dictionary. Earlier age was 30, now the age is 40. उसने नया एज का की नहीं बनाया, उसने उसी नाम की को अपडेट किया. नाउ अनदर थिंग, EMP डिपार्टमेंट equal to sales. I have a question over here. Is department key already residing in the dictionary? Is department key already there in the dictionary? Yes, Devanshi. No. No. What Python will do? Python will create this new key value pair. It will add this new key value pair. Check it out. Now compare this dictionary with this dictionary. Clear to everyone? Yes, Himanshu. सर एक और की वैल्यू पेयर इंसर्ट हो सकता है डिक्शनरी के अंदर, जैसे आपने किया अभी डिपार्टमेंट की थी और वैल्यू सेल्स थी. हाँ, हो सकता है. ये देखो, EMP आप इसमें कर लो, एज हो गया, डिपार्टमेंट ग्रेड कर लो, ग्रेड नाम का ए ग्रेड. चेक इट हिमांशु. Okay. Now I'm going to discuss one very good program with you all. That program may help you in the project. The program is, you are to write a program to add new students, roll numbers and marks. Okay. In already created dictionary. आपके पास एक डिक्शनरी पहले से बनी हुई है, in which you have roll number as the key, marks as the value. You want to add more roll numbers and marks in that dictionary. आपको और ऐड करने, कुछ पहले से हैं, कुछ ऐड करने. Okay. So I am taking here the dictionary name as S. Okay. Ask the user how many record the user want. Enter how many key value pairs. All right. Then take the for loop and go till X.
Clear to all? Ask from the user the roll number of the child. Enter the roll number. Enter the marks. Okay. Enter the roll number, enter the marks. Now put this data inside dictionary by making roll number as the key, marks as the value. By making roll number as the key, marks as the value. And print this data. The dictionary is print s. ओके अभी मैं इसको सेव कर रहा हूं और हम टेम्पररी इसका रिजल्ट चेक करते हैं कि अभी हमारा स्ट्रक्चर क्या बना है. टुडे इज 25th. डिक्शनरी प्रोग्राम 1. Add record. Okay. So I run this code. Sorry. How many key value pair? 4. Roll number 1 marks 50.5. Roll number 2 marks 65. Roll number 3 marks 85.5. Roll number 4 marks 95.2. Check it out. अभी हाफ कोड हुआ है हमारा. This is now already created dictionary. This is now already created dictionary. हमारी डिक्शनरी तैयार है. अब हमने इसमें एडिशंस करनी है. 4 रिकॉर्ड पहले से हैं. If we want to add more records, what you will do here, take a variable ch, assign the value yes. Take the variable ch and assign the value yes. Y means yes. You may enter y in a lowercase or you may enter y in uppercase. That is up to you. That is up to you. While ch equal to y in lowercase or ch equal to y in uppercase. Right? चाहे आप कीबोर्ड से लोअर केस में y एंटर करो, चाहे आप कीबोर्ड से अपर केस में y एंटर करो, while loop will go true. Print enter the details of new students. Before that, I put here one blank line. Okay. Enter the details of new students. So this data I copy. Right? Clear hai ji? Now ask the user again. Want to add more key value pairs? ओके. अब यहां पर जब वो इनपुट करेगा, यूजर हैज टू प्रेस Y
in lower or upper. Apart from Y, if the user is pressing any other key from the keyboard, this while loop will get fail. मान लो मैंने एंटर किया n, मैंने n एंटर कर दिया, n की वैल्यू ch की वैल्यू n हो गई, n यहां मैच नहीं किया, while loop मेरा फेल हो गया, राइट? प्रिंट आफ्टर addition dictionary looks like print s. Okay, got it? Let us now run it again. Enter how many key value pairs? अब ये शुरू में बनाते हैं हम 3 key value pairs. Roll number 1 marks 50.4. Roll number 2 marks 78.5. Roll number 3 marks 90. ये आ गई ओरिजिनल डिक्शनरी, ये आ गई ओरिजिनल डिक्शनरी. Enter the details of new students. Do you want to insert more students? Yes. Roll number 4 marks 100. Want to add more key value pairs? Yes. Enter detail of new students. Roll number 5 marks 96.0. Want to show more? No. Check it out. 3 तो पहले ही थे हमारे, ये 2 हमने और ऐड किए थे, ये 2 एडिशंस हो गई हमारी इसमें. Is the code clear to all of you? Any questions, any doubt? This is a very good program. It's a very good program. Yes, please. Any questions, any doubt? I am giving you 1 minute. All of you go through the coding carefully. Don't cram it. Don't go with the cramming of the coding. You will never be able to clear your concepts. Just try to view what I have done. Try to understand the logic. Yes, please. यहां थोड़ा सा मैं एक वो लगा दूं, ब्लैंक लाइन, ताकि डाटा क्लियर नजर आए. यहां नहीं, या इसके बाद लगा देते हैं इधर. ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी ऑन. हाँ जी, come with your doubts, or do I start asking questions now? Okay, in a brief way, in a brief concluding way, who will explain the program? अगर आपको लेमैन को ये प्रोग्राम समझाना हो in a brief way, how you will be able to convince a layman that what is going in the program? Yes, Devanshi. Sir, in this program, actually, we have to create a dictionary with the student's roll number and marks, and after that, we have to update the values in it. Like we have to add more values in it. Okay, okay. Is there any other way we can mold this program? Any other way via which we can modify the code, but output should remain same? Is there any other way? Anyone?
Yes, please. No one? Think about it. Yes, Riddhi has some idea. Yes, Riddhi, what are your ideas? सर हम ऐसे कर सकते हैं ना कि पहले हम लिस्ट बना लेंगे, फिर अब उसमें अगर हमने अपेंड करना होगा तो अपेंड कर लेंगे, फिर उसका डिक्ट फंक्शन यूज करके हम उसको डिक्शनरी कन्वर्ट कर लेंगे लिस्ट को। Yeah, it can be. It can be. वो तो फिर आप टपल से भी कर सकते हो. It can be. Yes, Divanshi, what are your ideas? Sir, by using zip method or function. By using zip function, you can create more key value pairs. But उससे आपका एक होगा key value pair create. या हो सकता है अगर आप उसको यहां डाल दो, लूप के अंदर डाल दो, हो सकता है. Clear? Clear to everyone? All right.